जय जगन्नाथ। आज आम स्टार्ट करवा चैप्टर परसेंटेज। तो समस्ते टिके ध्यान से देखियो, दिस इज द गेटवे ऑफ मैथमेटिक्स। परसेंटेज बिना आमे मैथमेटिक्स की एंट्री करि परिबा नाही। एटा होची एंट्री चाबी। परसेंटेज क्लियर हेले आमे परसेंटेज रिलेटेड बहुत गुडे क्वेश्चंस आमे करि परिबा, नाला असुविधा है। केयरफुली देखियो समस्ते वन बाय वन आमे पूरा इजी इजी क्वेश्चंस रु आमे टॉप मॉडल क्वेश्चन पर्यंत आराम से जीवा। सो फर्स्ट देखियो, ये जो परसेंटेज आमे कहउचंती, परसेंटेज कम्स फ्रॉम द वर्ड दैट इज योर पर एंड सेंट। सेंट मान होचे 100, सेंट मान होचे 100। परसेंटेज कम्स फ्रॉम द वर्ड परसेंट, सेंट मींस होचे 100। सो सपोज आम क्लास रे 100 मार्क 60 मार्क रो एग्जाम है, तुम एब्सेंट अच्छो मात्र 15 मार्क रखीच, ओनली 15 आउट ऑफ 60। तुम्हार परसेंटेज केते? परसेंटेज केते माने 15/60 into 100 हैला। जो स्कूल में करथले, स्कूल ले केमति करथले ना 60 रु रखिलो 15, एक रु केते, एक रु ची 15/60, 100 रु केते, एटा का मैं स्कूल रे पढ़थिले ऐकिक धारा 100 into 15/60, that is here 25%। this is the percentage symbol। एठी गोटे जीरो दबो, एठी गोटे जीरो दबो, एटा होची परसेंटेज रो रियल सिंबल। तबरे कि हम एमती सिंबल लिखि दियंती, बट दैट इज द रॉन्ग वन। दिस इज द राइट सिंबल ऑफ परसेंटेज। बुझ परलो? तो सपोज 20% देइछि गोटे क्वेश्चन, ताके हम फ्रैक्शन को केमती कन्वर्शन करिवा, केमती कन्वर्ट करिवा, तो परसेंटेज को केमती फ्रैक्शन करिवा, फ्रैक्शन को केमती परसेंटेज करिवा। 20% माने 20/100, 20% माने 20/100। 20/100 जगह थे ना 1/5। यार रिवर्स को जीवा, 1/3 गोटे फ्रैक्शन अछि। ये फ्रैक्शन को हमें केमती परसेंटेज को कन्वर्ट करिवा इनटू 100। सो दैट इज कमिंग 33.33%। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज को कन्वर्शन कले हमें 100 मल्टीप्लाई कर दोचे, किंतु गोटे परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन कन्वर्ट कला बेले हमें 100 डिवाइड करछो। दिस इज द डिफरेंस। ओके, then beside that some important fraction to be remembered to solve the questions as quick as possible। remember some fraction 1/2, ये कितना फ्रैक्शन घोषित दबा to solve the questions as quick as possible। 1/2 जो 50%, 1/3 33, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 whole 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 whole 1/9%, और तक 1.11% भी लिखा जाए। 1/10 तो समझते जानी चंती 10%, 1/11 9 whole 1/11%, 1/12 1/12 देखते 8 whole 1/3%, 1/13 7 whole 9/13%, 1/14 7 whole 1/7%, 1/15 6 2/3%, 1/16 6 1/4%.
So these are some important fractions to be remembered. बुझला एई फ्रैक्शंस सब आसे जदि ओ देखो एटी हमर एटी लिखले केते ना एटी 1/3 जदि 33 1/3% आसे ताले ऑब्वियसली 2/3 केते हबो ना 66 2/3 और 66.67% आसे जीवो 1/5 देखो हमें 20% लिखछन 2/5 और 3/5 ये भी यूज 2/5 होची 40% 3/5 आसीबो 60%. ठीक अछि तो similarly another two important factors also remember 1/21 गोटे परीक्षा रे frequently आसुची बैंकिंग रे बेसी आसे एसएससी रे आसे नाही ओडिसा एसएससी रे आसे नाही ए बैंकिंग रे तीनटा फ्रैक्शन सब बळे आसे डीआई कैलकुलेशन कला बळे आसे 1/21 1/24 1/29 this is 4.76%. This is 4.16% and this is 3.44%. एक तरह फ्रैक्शंस हमको मन रखिया पे पड़ियो एबे हम भीतर क्वेश्चंस आसला कि जदि हम एते गोटे फ्रैक्शन घोषिबा आर नॉर्मल यूजेस कोन व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस फ्रैक्शंस वेरी इजी सपोज 80 मार्क्स ला फुल मार्क गोटे पिला मात्र 10 मार्क रखि देन फाइंड द परसेंटेज मार्क हमें रेगुलरली यूनिट मेथड्स जोटा हम ऐकिक धारा कहउछंती केमति करूछन ना 1 रु केते बाहर करूछंती 1 रु 10/80 100 रु बाहर करिबा that is 100 into 10/80 so this is coming 12.5%. ये ला गोटे वेज सेकंड वेज जदि हम फ्रैक्शंस मन रखिदिबा ताले ए प्रोसेस हमरा आवश्यकता नाही केमति ना 10 टा 80 रो केते पार्ट 10 टा 80 रो 1/8 1/8 जे लेखा है तुम सामने देखो दैट इज 12.5%. इफ यू रिमेंबर दिस फ्रैक्शन ताले हार्डली हमें 2 सेकंड रे क्वेश्चन टा सॉल्व कर दवा सो दैट इथि हम सॉल्व करे पहले 30 सेकंड लागुतला तमे 2 सेकंड रे सॉल्व कलो फायदा ला 28 सेकंड यदि गोटे क्वेश्चन हम 28 सेकंड सेव कले ताले हम 30 टा क्वेश्चन मैथ रे करूछन केते टाइम तुम सेव करियो देखो से सेविंग टाइम रे जदि हमें एक्स्ट्रा 5 टा क्वेश्चन करि देले 5000 रैंक तुमरो अप्रूव पड़ेगो so that's why every second counts okay जिबा हमें किछि क्वेश्चंस को जिबा फंडामेंटल क्वेश्चंस को जिबा ट्रेडिशनल हमें सॉल्व करिवा जेटा कि फंडामेंटल मेथड्स कहउछंती तापर हम शॉर्ट ट्रिक्स की जिबा आगे सिखिबा तापर स्पीड चलेबा गाड़ी ये ला हमरो मेन मोटो आगे सिखियो तापर स्पीड दिबो आसला क्वेश्चन नंबर 1 A is 20% more than B. First statement. Then पर असला टा second statement. Carefully देखो आराम से बुझे दुजे fundamental methods रे. तो हमें कौन करिवा A line टा होची हमर statement. A line टा होची question. स्टेटमेंट लाइन रे मन रखिता ध्यान पर जहां ना लिखा अछि ताकू नब 100 ध्यान पर बी लिखा अछि ना रे तो लेट ने जाओ सैलरी ऑफ बी इज 100 कोन पे बी नेला 100 एटे ध्यान पर बी लिखा अछि सेत पे बी नै गेला 100 बी जदि 100 हैला ए केता हबो ए लिखा अछि 20% मोर माने ऑब्वियसली आसीबो 120 क्लियर then question पचारला then असला क्वेश्चन कौन क्वेश्चन पचारला b is what percent less than a b निश्चित लेस अछि b केते लेस अछि ना 20 लेस अछि ध्यान पर देखलो क्वेश्चन लाइन रे ध्यान पर कहा ना लिखा अछि ध्यान पर ए लिखा अछि ध्यान पर जहां ना लिखा है तो ताको रखिवा में डिनोमिनेटर रे ध्यान पर ए लिखा अछि a given 120 रखले डिनोमिनेटर रे इनटू 100 कोडिएटा 120 कटिगला 1/6 जे आसीला 16.67%
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आउ थर कहूँ रूल्स होची फर्स्ट लाइन रे ध्यान पर जहाँ ना लिखाई ताकू नब 100। ठीक अच्छी। रूल नंबर 2 क्वेश्चन लाइन रे क्वेश्चन स्टेटमेंट रे ध्यान पर जहाँ ना लिखाई ताकू रखिबो डिनोमिनेटर रे 120 into 100। इटा फंडामेंटल इला फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल जरा मन रहइबो ध्यान माने कोन कोउट कोन रहइबो त से कोनोसी क्वेश्चन में बीट हबो हैला। गाड़ी हमें सिखिले पढ़ियार चलेले एबे चले एनएच रे चलेबा। एनएच माने स्पीड चलेबा 80 रे 80 रे अधिका चलेले फाइन पड़ी जिवो। रूल्स कुछ कोन से फ्रैक्शन फार्मूला यूज करियो। इटी हमर 20% लिखा है। 20% जे केते फ्रैक्शन मन रखिया पड़ियो 1/5। ए मेथड ता ना होची फ्रैक्शनल मेथड। सेटा होची फंडामेंटल मेथड एला फ्रैक्शनल मेथड। 20% जे एटा होची 1/5। क्लियर। फर्स्ट लाइन में देख लो मोर लिखा है ना लेस लिखा है मोर लिखा है। मोर लिखा है आंसर केमती बाहर ना 1 1 टा 5 रे ऐड हो बस फिनिश। 1/6 1/6 जे 16.67%। आउ थर कहूँ फर्स्ट लाइन में 20% लिखा है 20% जे 1/5 सरला। देन फर्स्ट लाइन में मोर लिखा है बोली 1 टा 5 रे ऐड है कि 1/6 हे गला। जदि फर्स्ट लाइन में मोर न लिखा है कि लेस लिखा था तो ये 1 टा 5 रु माइनस है कि 5 minus 1 4 आस्ता 4 आस्ते 1/4 आंसर आस्ता 25%। क्लियर कि बुझ पड़छ ना नहीं। जो माने बुझ पड़छ टिके सब्सक्राइब कर दियो चैनल टा। मोर क्वेश्चंस पाइबो लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक अछि। जीवा चला क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन चला जीवा डायरेक्टली चलो फ्रैक्शन मेथड रे कर दबा। आउ फंडामेंटल मेथड को जीवा नहीं। 25% लिखा अछि 25% जे केते फ्रैक्शन ना 1/4। फर्स्ट लाइन में मोर लिखा अछि मोर माने हमें कोन करिवा 1 टा 4 रे ऐड हे जिवो तो दैट इज 1/5 into 100 1/5 जे केते परसेंट 20%। B for Bhubaneswar is the right answer. Clear? Excuse me. जीवा क्वेश्चन नंबर 3 नंबर 3 चलो जीवा लिवेली क्वेश्चन नंबर 3 जो गाड़ी टिके एनएच रे चलेबा गाड़ी स्पीड चलेबा एनएच रे। नंबर 3 A is 25% more than B, then B is what percent less than A? Correction the question कल। A is 25% more than B। 25% जे केते फ्रैक्शन करे 25% जे 1/4 हैला 1/4। देन फर्स्ट लाइन ने मोर लिखा है मोर लिखा आंसर कौन जीव कि आम कथा 1 + 4 into 100 दैट इज 20%। बुझेला। किंतु ए क्वेश्चन रे आमे जो करेक्शन कले ए जो मोर टा को करेक्शन करके लेस कले आंसर 20% आसिला। ऑप्शन नाही तो क्वेश्चन टिके रॉन्ग अछि हम टिके करेक्शन करबा एटा चला करेक्शन कर दवा। ए मोर जगह रे चला हम लेस लिख दा कना मोर क्वेश्चन हम दिदा कलेनी एबे चला लेस क्वेश्चन गुटे मॉडल कर दवा। नाउ दिस इज योर न्यू क्वेश्चन। A is 25% less than B, then B is what percent more than A? 25% जे 1/4। फर्स्ट लाइन में लेस लिखा है लेस थिला में कौन करबा कि माइनस करबा 4 - 1 into 100 4 - 1 जे 3 1/3 जे केते परसेंट करे ना 1/3 जे 33.33%। B for Bhubaneswar is the right answer. Clear? जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर
एज 50% लेस 50% जे केते फ्रैक्शन ना 1/2 लेस लिखाई लेस लिखाई कौन करवा कि माइनस कर दवा 2 minus 1 into 100 2 minus 1 माने 1 1/1 माने 100% D for Delhi is the right answer. ठीक है 5 नंबर क्वेश्चन को जीवा एज 50% मोर देन B 50% जे 1/2 मोर लिखला मैंने आंसर केता हबो ना 1 टा 2 रे ऐड हे गला 1/3 लिखि देली डायरेक्टली 1/3 into 100 1/3 into 100 जे 33.33% is the right answer. Clear? ए भेराइटी सरला चलो अलगा भेराइटी टिके ए क्वेश्चन का टिके मॉडिफाई करबा स्लाइटली मॉडिफिकेशंस नंबर 6 की पहुंचले two numbers x and y are 20% and 30% more than a third number z. So here in this question, two numbers x and y are compared from a third number z. Dita number third number compare कराउछु माने चलो third number let third number z को नहीं गले 100. Then x is coming how much 20% more 120. Y is coming 30% more 130. Finish. एबे जीवा क्वेश्चन लाइन क्वेश्चन कौन कहला सेकंड नंबर माने के 130 इज व्हाट पर्सन मोर देन द फर्स्ट नंबर निश्चित मोर अछि केते मोर अछि देखलो 10 मोर अछि 10 मोर फ्रॉम व्हिच नंबर देन पर कोन नंबर लिखाय अछि देन पर फर्स्ट नंबर लिखाय अछि फर्स्ट नंबर किए ना फर्स्ट नंबर होचा हमर x ला 120 आमे कथा हेतले ध्यान पर जहां ना लिखाइतो ताकू लिखिबो डिनोमिनेटर रे 100/120 जे 1/12 1/12 जे 8.33% is the right answer. Clear? Move करिवा next question. Question number 7. Exactly same variety जो माने बुझी पारलो नाही second chance is पर आउ थर्ड क्वेश्चन चलो जीवा two numbers are 20% 40% more than a third number तो थर्ड नंबर टाकू लेट नहीं गले z सेठी z लिखा हैतला एटी z लिखा जाय नाही 100 then x is coming how much 20% more means 120 y is coming 40% more means 140 x la 120 y la 140 over then the first number k na 120 is what percent less than second number निश्चित less अछि केते less अछि रे ना 20 less देखला दान पर कहा ना लिखाय छी दान पर लिखाय छी सेकंड नंबर एठी हमर सेकंड नंबर के ना सेकंड नंबर हो 140 20/140 into 100 देखि 1/7 1/7 जे 14 whole 28% A for Ahmedabad is the right answer. India Pakistan match रे पाकिस्तान हारिला इंडिया तो ठीक है जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज लाइक एंड शेयर जो ने भूली जाइछो प्लीज लाइक एंड शेयर क्वेश्चन नंबर 8 तुम मन पई काम पर आई एम गिविंग 1 minute time to all of you solve करो quick your time counts now be quick answer no देखिबा two numbers are 20% more and 10% less than a third number तो let third number z को नहीं गले 100 x के तला 20% more means 120 y के तसला देख लो कि 10% less माने 90 over then
This second number is what percentage of the first, more कि less लिखा गला नहीं. Second number किए ना 90 90 is what percentage of the first number. ऑफ पर जो नंबर लिखा है से नंबर को डायरेक्टली डिनोमिनेटर लिखि दियो. ऑफ पर लिखा है फर्स्ट नंबर हो 120 90 by 120 जे 3/4. सी फॉर कटक दुर्गा पूजा इज द राइट आंसर. जदि मोर लेस पचार था तले आम माइनस करके 30 कंपेयर करते. जदि मोर लेस पचारा ना डायरेक्टली पचारा सेकेंड नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर. सो ऑफ पर जो नंबर लिखा है से नंबर टाको डिनोमिनेटर से आम लिखिदे. क्लियर. जो मैंने बुझी पाल ना सेकेंड चांसेस फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 9 रे तुम डाउट से क्लियर करिवे. ध्यान से देखो. Two numbers are 10%, 20% less than a third number. तो थर्ड नंबर को नहीं गला हमें 100. x कितना असला 10% लेस. y कितना असला 20% लेस. फिनिश. स्टेटमेंट ओवर. जब क्वेश्चन को जीवा. क्वेश्चन कौन कहला. फर्स्ट नंबर किए ना 90 is what percentage of the second number. ऑफ पर जो नंबर लिखा है से नंबर को लिखा डिनोमिनेटर. ऑफ पर किए ना 80 90 by 80 into 100. ठीक है. दिस इज 9 by 8 into 100. 9 by 8 जी 112.5% इज द राइट आंसर. बी फॉर भुवनेश्वर. कि बुझी पड़छ ना नहीं. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. जो माने सब्सक्राइब करनो टिक सब्सक्राइब कर दियो. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पूर्वरु जीवा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. This is new varieties. अलगा varieties गला में when 80% of a number. आगे में फंडामेंटल मेथड्स रे करिवा. तापर शॉर्ट मेथड्स को जीवा. 80% of a number लिखले 80% of a number तो x नहीं गली is added to 12 सहित add हे गला. The number becomes itself माने x. Okay. 80% of x is added to 12. The number becomes itself माने x. सॉल्व कर देले x पाई जो तमे कहते ना 60. x पाई जो 60. दीटा स्टेप हो x पाई जो 60. इला फंडामेंटल मेथड्स. चला हम टिके शॉर्ट मेथड को जीवा. 80% of a number is added to 12. The number becomes itself माने 100%. अरे तुम्हें तुम्हारा 100%, मु मोर 100%, नंबरटा नंबर 100%. ताले को 80% सहित आमे केते परसेंट ऐड करले 100% पाइबा. को 80% सहित केते परसेंट ऐड करले 100% पाइबा कि रे 20%. आमे ऐड करछन केते देखलो 12 ता माने 20% आउची 12. डायरेक्टली x यूज न करी डायरेक्ट लिखिबा में 20% आउची 12. 100% टा केते 20 50 100 12 50 60. फिनिश. आउथरे कहूची 80% सहित 20% ऐड करले हम 100% पाइबा. but we are adding 12, so 20% equal to 12. 20% equal to 12. 100% equal to 60 is the right answer. ठीक है. चलो जीवा. जो माने बुझी पाल नहीं चलो सेकंड क्वेश्चन माध्यम रे बुझीबा. 88% of a number is added to 72. The number becomes itself माने 100%. तो 88% रे केते परसेंट ऐड करले 100% हो 12%. आमे कोन ऐड करछन केते 72 नो कि रे. सो लेख 12% equal to 72. 100% टा केते 12 रे केते गुणले 72 6. 100 रे 6 गुण तो 600. 600 अछि कि रे. अच्छी एठी D for Deras Dam is the right answer. Clear.
जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो सेम प्रोसेस स्पीड अप करिवा क्वेश्चन नंबर 12 81% of a number is added to 76 the number becomes itself माने 100% 81% टा 100% हे गला केत परसेंट बढ़िला 19% तो लेखो 19% इक्वल टू 76 हैला 19% इक्वल टू 76 19 रे केते मूल्य 76 4 19 चो 76 तो 19% टा 76 हैला 100% आसो केते 400 C for Katak is the right answer ठीक है जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन टिके मॉडिफाई कराई जस्ट स्लाइटली 85% of a number is added to 42 the number becomes itself लिखा जाए 9 number becomes 92% लिखा जाए तो 85% टा हे गला 92% नो कि 85% टा 92% ला 85 रे केते मिसले 92 हबो कि रे 7% ने केते 85% 7% मिसले 92% हबो बट आम ऐड करछन केते ना 42 7% लिखि दियो 42 7% जदि 42 हैला 100% टा केते 742 100 600 600 अछि ना चॉइस रे अछि ए इज द राइट आंसर क्लियर बुझा पड़छि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर 14 से वाला क्वेश्चन टिके मॉडिफाई कराई 82% becomes 90% 82% टा 90% हे गला 82 रे केते मिसला 90 होबो कि रे 82 रे केते मिसला 90 होबो 8% हमें ऐड करछन केते ना 40 सो लेखो 8% इक्वल टू 40 जदि 8% टा 40 हैला फाइंड द नंबर पचारने फाइंड द नंबर पचारले 100% केते बाहर करथांते इट लास्ट मोमेंट क्वेश्चन ट्विस्ट कर देला फाइंड द नंबर न पचारी फाइंड 37% ऑफ दैट नंबर कह देला फाइंड द नंबर कह दिले 100% बाहर करथांते 37% टा केते पचारला 8 रे 5 गुणले 40 37 रे 5 गुणले केते 185 185 अछि चॉइस रे यस B for Balangir is the right answer. जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 15 बरहमपुर पिला को सर बी फॉर बरहमपुर कहीं न हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बी आंसर आसले बरहमपुर में कहवा क्वेश्चन नंबर 15 ये पूरा संपूर्ण अलग वेराइटीज आसला चलो जीवा length and breadth of a rectangle increase by 30% and 20% respectively एटा तीनटा मेथड रे हमें करबा गोटे होची बेस 10 मेथड बेस 10 कोन लेंथ नै जा 100 सॉरी 10 नै जा लेंथ नै जा 10 ब्रेड्थ भी नै जा 10 100 नै 10 नै जना मेटो लेंथ 100 लेंथ 10 ब्रेड्थ 10 एरिया फार्मूला कौन करी एरिया फार्मूला होची लेंथ इनटू ब्रेड्थ ला 100 लेंथ रा 30% बढ़ी गला 10 न 30% 3 बढ़िला माने हला 13 ब्रेड्थ रा 20% बढ़िला 10 न 20% होची 2 हला 12 एरिया केतला 13 रे 12 मल्टीप्लाई कर 156 हला 100 थिला 156 हला अरे पिले बढ़िला केते कि ना 56% अछि ना ऑप्शन ना नहीं अछि एक नंबर ऑप्शन अछि एक इज द राइट आंसर ये गोटे मेथड्स आउ थरे कहूची बेस्ट 10 मेथड कोन लेंथ नै गेले 10 ब्रेड्थ नै गेले 10 एरिया होची लेंथ इनटू ब्रेड्थ स्कूल ले पढ़थले लेंथ इनटू ब्रेड्थ 10 इनटू 10 100 न्यू लेंथ ला 13 30% बढ़ी गला
10 रो 30% 3 हे गला 13 ब्रेड हे गला 20% ये गला 12 156 ये गोटे मेथड सेकेंड मेथड चलो जीवा हमें कौन ता मेथड होची कौन सेटला फार्मूला शॉर्ट फार्मूला केमते हमें यूज करबा देखिबा चलो कौन शॉर्ट फार्मूला फार्मूला लिखि दियो फार्मूला होची x plus y plus xy by 100 x plus y plus xy by 100 this is very important formula बहुत गुडे क्वेश्चन में फार्मूला यूज करा जाए ए फार्मूला कोड यूज होबो ना हम से विषय परे कथा हबा इंक्रीज जगह खाली प्लस लिखो डिक्रीज जगह माइनस लिखो x जगह प्लस 30 लिख y जगह प्लस 20 लिख देन 30 into 20 by 100 ठीक है 30 plus 20 30 into 20 by 100 30 plus 20 कितना आसला करे 50 ये 0 कटिला this is 6 net result coming 56% is the answer x plus y plus xy by 100 चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 x plus y फार्मूला पके आ गोटे क्वेश्चन करबा डाउट्स क्लियर हबो लेंथ एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 25% 20% x जगह रे प्लस 25 लिख y जगह रे प्लस 20 then 25 into 20 by 100 this is coming 45 25 दिन 50 ये वाला 5 result asla 50% C for Katak Durga Puja is the right answer बुझा पड़ला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जीवा एनएच रे गाड़ी चलेवा चलो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज करला रे डिक्रीज माने कोन करिवा माइनस सिंबल लिखिवा कथा आइतला -20 -10 plus -20 into -10 by 100 this is coming -30 this is coming minus plus आसीगला 2 net result -28% ऑप्शन नंबर ए जदि गोटे पिला एटा को माइनस रे माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस लिखि दिए ता आंसर आसी केतना 30 इला टू 32 32 भी ऑप्शन रे अछि भूलै जीव रे बी केयरफुल हैला तो प्रीवियस क्वेश्चन में दीटा प्लस नहीं करथले दीटा माइनस हे गेला एबे किछि पिला को माइंड रे डाउट थिबो कि गोटिए प्लस गोटिए माइनस थले हमें कोन करिवा अछि त उपाय जीवा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आसी गेला जहा खुलतलो से आसी गेला प्राइस ऑफ ए कमोडिटी increases by 40% increases by 40% माने प्लस 40 consumption decreases by 15 minus 15 plus 40 into minus 15 by 100 this is coming plus 25 yes minus 6 net result minus 19 means 19% decreases option A is the right answer decrease ना increase करे increase रे एटा भूल गले एटा ऑप्शन दीटा को माइनस रहे छ ऑप्शन एटा को प्लस कर दबा आ को एटा प्लस हे जो प्लस 25 माइनस जे प्लस 19 तो 19% इंक्रीजेस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर तो एटी किछि पिला माइंड रे स्ट्राइक करि पारे कि सर एटी कोडी फार्मूला पडिबो से तो लेंथ ब्रेथ रे पडिला एटी कोन पे से फार्मूला पडला जानिबा दरकार ना नहीं यस वेरी इजी जोटी दीटा अननोन नंबर मल्टीप्लाई करा हले गोटे आंसर बाहरुतबो सेही केस रे फार्मूला पडिबो माने कोन ना लेंथ इनटू ब्रेथ होची हमर एरिया ना हेरे एरिया फार्मूला होची लेंथ इनटू ब्रेथ से फार्मूला अप्लाई हला एरिया जागर जदि पेरीमीटर दिए थांदे फार्मूला अप्लाई हे न थांदा बुझा पड़ला एडी के अप्लाई हला पेट्रोल लीटर होची 103 टंका एला प्राइस
तमे गोटे मासरे 10 लिटर तेल खर्च कल क्वांटिटी टोटाल खर्च केतला 103 इंटू 10 केतला 1030 टंका मासु खर्च लेना नहीं ता माने प्राइस इंटू योर कंजप्शन प्राइस होची 103 टंका तमर कंजप्शन होची 10 लिटर पर मंथ इंटू कर देला 1030 होची एक्सपेंडिचर दैट्स व्हाई दिस फार्मूला एप्लीकेबल प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर दैट्स व्हाई फार्मूला इज एप्लीकेबल हैला मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ए फार्मूला पर चला जीवा नेक्स्ट बड़े बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आसो प्लीज लाइक एंड शेयर जो लाइक करनो जो मैंने सब्सक्राइब करनो प्लीज सब्सक्राइब तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा न लामे छाड़ दवा चला जीवा 19 नंबर क्वेश्चन प्राइस ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी डिक्रीजेस बाय 30% लेखो -30 consumption increases +20 then -30 into -20 by 100 तो -30 -20 जे केता आसला कि रे -10 एटा -6 नेट रिजल्ट -16% -16% कोड अछि ऑप्शन नंबर बी फॉर बरहमपुर इज द राइट आंसर बरहमपुर खट्टा बहुत बढ़िया प्रिपेयर हुए ए जे कोनी आचार आ बड़ी पांपड़ बरहमपुर द नंबर 1 बरहमपुर आचार विश्व प्रसिद्ध ताकू ए जो कौन सो टैग मिलिया दरकार बरहमपुर आचार 20 नंबर को जीवा प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 20% +20 लिखले by what percent consumption decreases decrease by minus लिखले what by y लिखले plus 20 into minus y by 100 equal to 0 अरे 0 महाशय कोड आसले कहला 0 महाशय एटू आसले लिखा है कि देखो ओवरऑल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम माने नो चेंज माने ऑब्वियसली 0 चेंज ही हो हैला याको हमें सॉल्व कले कौन हबो टिके टाइम टेकिंग रे बाबा देखो टिके टाइम टेकिंग आंसर आसीबो तमरो 16.67% बसिची दुर्गा पूजा मेड़ सी फॉर कटक इज द राइट आंसर ई गोटे मेथड्स ए क्वेश्चन रे हमें आउट अलगा मेथड रे करिवे फ्रैक्शनल मेथड रे पकिया फटकी नहीं जियो 20% देज 20% जे केते फ्रैक्शन करे मन अछि ना भूली गेलनी जो भूली जो प्रीवियस खाता देखी दियो 20% जो 1/5 फर्स्ट लाइन देख लो इंक्रीज ना डिक्रीज लिखा है इंक्रीज लिखा है इंक्रीज माने कोन करबा आंसर केमिति बाहरिबो हमें कथा हेतले 1 टा 5 रे ऐड हे जिवो दैट इज 1/6 1/6 जे 16 2/3% और 16.67% आराम से गला एबे तो माइंड रे स्ट्राइक करला निश्चित कि कहूची बा कि कहूने मन भीतर अछि कि सर जदि ये फ्रैक्शन फॉर्मूला एते इजीली हे पारुची आपण एटा काई सिखेले एटी सिखिबार आवश्यकता कोन थला एते लंबा मेथडटा ए 2 मिनिट लागि जो सॉल्व करिया पे त हम 2 सेकंड रे कर दवा कोन पे ना एटी मुंडो ऊपर स्टार गोटे लागि छि रे तो लिखाई नहीं दुकान आगु जो लिखाई तो 50% डिस्काउंट स्टार स्टार माने कोन ना कंडीशंस अप्लाई लिखाई तो देखो दिल्ली रे बाहर छि 11000 टका दियो घर 100% लोन करिके नहीं जाओ लगी स्टार माने कंडीशंस आप तो 11000 देले घर मिल जिवो स्टार कंडीशंस अप्लाई से कंडीशन के भी सैटिस्फाई करियो ताले हमें जीवा कंडीशन कोन ना जदी राइट हैंड साइड रे 0 थिबो माने ओवरऑल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम जदी थिबो ताले ए फार्मूला काम करिवो जदी लिखाई तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 10% इंक्रीज बाय 10% देला ए महाप्रभु फेल मारिले एई फार्मूला ही काम करिवो सेति पे तुम कहूची फंडामेंटल मेथडटा सिखो एटा होची साइड आइटम फंडामेंटल मेथडटा होची हमर भोजी रे मटन आइटम एटाला सलाड आइटम हेले हला न हला नाही बुझा पड़छ ना नहीं जीवा चला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कि केते शीघ्र करि परिबो क्वेश्चन नंबर 21
remain same लिखाई पड़ो से फॉर्मूला price decreases by 25%. 25% जे 1/4 फर्स्ट लाइन ने डिक्रीज लिखाई डिक्रीज माने कौन हम ना 1 टा 4 रु माइनस हो 1/3 1/3 जे समस्त जना अछि 33.33%. ऑप्शन नंबर ए फॉर अहमदाबाद इज द राइट आंसर. ठीक है जुबा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आसिला 22 price of a certain commodity increases by 20%. What percent consumption must be decreased so that overall expenditure बावर आसीगला decreases by 10%. एठी आउ जो decreases by 10% दला एठी आउ से महाप्रभु काम करिवो नाही. चला में फंडामेंटल मेथड रे जीवा price increases by 20% लेख plus 20 okay by what percent consumption decreases minus y plus 20 into minus y by 100 equal केते लिखिबा कि ना -10. अरे -10 का लिखा ला कहलो 10% डिक्रीजेस लिखाई छी सेते -10 लिखले बहुत पिला तरबर है कि कला बेले एटो खाली 10 लिखि दियंती. बी केयरफुल 10 लिख देले भूल हे जीव हैला सॉल्व करले y तमरो केते आसीबो ना 25% will be the right answer. आसीगला b for बरहमपुर आचार is the right answer. b आसीबा हम देखिया आउ देखिया लाउच के b होबनी 20 एला तमरो केते 10 माइनस कले केते आसला 99 रे हवने 30 by 121 by 4 ठीक है 25% आसियो हो आमे जिबा 25% ठीक अछि आंसर. आमे वर्तमान जिबा कोन ए जो क्वेश्चंस आमे सॉल्व करले ए क्वेश्चन टा को आमे ए मेथड रे टाइम टेक लागुची ना नहीं निश्चित लागुची. अच्छा जे फ्रैक्शन मेथड आडी पडिबो नाही काइना 10% डिक्रीज लिखाला आमे चला एमती गोटे मेथड सिखिबा जो मेथड रे क्विक भी परथबो आ सब केस रे एप्लीकेबल रेस्ट्रिक्शन किछ नथिबो. जिबा कोन सपोज ओवरऑल एक्सपेंडिचर नै जा 100 टका एटा सुंदर मेथड टा कोनोसी बही रे पाइबो नाही. ए मेथड टा तुमको कहि दउची बुझि जाओ. प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 20 माने 100 थिला ना हम 120 रे पहुंची गले. इनिशियली 100 थिला प्राइस 20% जदी बढ़ी जाए हमें 120 टका खर्च करिया. by what percent consumption must be decreased हवा so that overall expenditure decreases by 10%. तो overall expenditure टा 10% decrease हवा दरकार. इनिशियल 100 माने फाइनल टा 90 हवा दरकार. ओके आमे कोड अछंदी कहला 120 रे अछंदी जिबा कोडी कि 90 को जिबा केते खसिला 30 खसिला कोउठु 30 खसिला कोउठु 120 रु 30 by 120 into 100 1/4 आराम से असला 25% कि रे बुझा पल्ला ना आउ थरे कहूची इनिशियल एक्सपेंडिचर नै गेले 100 टका प्राइस 20% बढ़ी गला माने हमें 120 रे पहुंची गले. इंस्ट्रक्शन दिया आइची ओवरऑल एक्सपेंडिचर 10% डिक्रीज करियो माने 90 को जिबा 120 रे अछंती 90 को जिबा 30 कमिला 30 कोड कमला ना 120 30 by 120 into 100 is the right answer. ठीक है जीवा चला नेक्स्ट क्वेश्चन जो मन को डाउट होची तो क्लियर करियो नेक्स्ट क्वेश्चन माध्यम रे. क्वेश्चन नंबर 23 प्राइस ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी डिक्रीजेस by 20% से मेथड रे करियो. इनिशियल एक्सपेंडिचर नै गेले 100 प्राइस डिक्रीजेस by 20% 20% डिक्रीज माने कोडी पहुंचले 80 by what percent its consumption increase so that overall expenditure decrease by 8%. overall expenditure 8% decrease करियो 100 थला ना इनिशियल टा फाइनल टा 92 होवा दरकार. अरे हम अछंती कोडी 80 रे अछंती नै कि जिबा 92 को केते बढ़िला
12 बढ़िला कोठू 12 बढ़िला ना 80 रु 12 बढ़िला 12 by 80 into 100 15% is the right answer अच्छी ऑप्शन रे अच्छी C for Chandval is the right answer option C ठीक है जीवा मूव करिवा नेक्स्ट क्वेश्चन अलगा वैरायटी की जीवा ए वैरायटी क्लियर आसीगला रेडियस ऑफ ए सर्कल डिक्रीजेस बाय 20% रेडियस लिखा अछि 20% डिक्रीज कला फाइंड परसेंटेज इफेक्ट ऑन इट्स डायमीटर अरे डायमीटर फॉर्मूला कौन कहलो ट्वाइस ऑफ रेडियस 2 is a constant number of percentage change ऊपर इफेक्ट किछि न थाए r is only one variable जोटी गोटिए मात्र वेरिएबल थिवो मन रखिताओ गोटिए वेरिएबल थिवो आमे कथा हैतले दीटा वेरिएबल मल्टीप्लाई हेले आमे से एक्सप्लोसिव फार्मूलाटा पकेवा कथा हैतले यदि गोटिए मात्र वेरिएबल थाए कोनोसी फार्मूला अप्लाई करिवो नाही रेडियस टा जेति परसेंट चेंज हेछि ये आंसर भी सेति परसेंट हो 20% डिक्रीजेस डायमीटर 20% डिक्रीज हो डायमीटर काम सरी गला एबे जिबा सर्कमफरेंस फार्मूला कोन करी वृत्तर परिधि फार्मूला मेंसुरेशन सब बहुत पिलांगर भलो होय सुनतली मैट्रिक रे वृत्तर परिधि फार्मूला होछि 2 पाई r 2 is a constant number pi is a constant number r is only one variable ताले गोटिए वेरिएबल अछि माने आंसर कोन होबो ना सेम 20% डिक्रीजेस दैट इज द राइट आंसर जो माने बुझी पल्ला नहीं चला जीवा थर्ड फार्मूला दैट इज अबाउट एरिया फार्मूला कौन करी एरिया फार्मूला होची पाई आर स्क्वायर तक भांगी देला आर इंटू आर लिख देले हे गला आर स्क्वायर पाई जे कांस्टेंट नंबर एटी आर आर मल्टीप्लाई करा है छी त माने x जगह रे आर y जगह रे भी आर -20 हम जो एक्सप्लोसिव फार्मूला पके दवा नो की x plus y plus xy by 100 तो -20 कहीं माइनस लिखले ना डिक्रीज लिखा है छति पे प्लस -20 into -20 by 100 this is -40 this is +4 net result -36 36% decreases clear please like and subscribe भूलंतु नहीं बंधुगण जीवा 25 नंबर for more videos the radius of a cylinder increase by 30% এটা बहुत interesting question টা radius of a cylinder increases by 30% 30% increase करियो वाला height decreases by 20% 20% height decrease कर देला find percentage change of its core surface area and volume दीटा क्वेश्चन देछि core surface area समस्तंगर मेंसुरेशन बहुत भलो होतला स्कूल ले core surface area फार्मूला कोन कि रे 2 pi r h 2 pi r h सिलेंडर रा core surface area फार्मूला 2 pi r h 2 is a constant number pi is a constant number r h multiply कराई छ माने x plus a फार्मूला एप्लीकेबल हमें कथा हैतले जोटी दीटा वेरिएबल मल्टीप्लाई हबो सेठी x plus y plus xy by 100 फार्मूला एप्लीकेबल तो लिखो x जगह रे +30 y जगह रे -20 plus 30 into -20 by 100
this is plus 10, this is minus 6, net result plus 4 माने 4% increases. तो core surface से आंसर आसेला 4% increases. सबुथिरे तो 4% देइछि. ठीक अछि. एबे चला जिबा वॉल्यूम फार्मूला. लिखली वॉल्यूम फार्मूला कोन करे ना पाई r स्क्वायर h पाई r h r स्क्वायर ले देला r h पाई जे कांस्टेंट नंबर इडी तीनटा वेरिएबल हे गेला r h तीनटी का फार्मूला तो सार तुमको पढ़े नांती कोन करिया छाड़ दवा ना कोन नो व्हिच दी टिकिया फार्मूला सिकितले भी पाकिस्तान विजय करि परिबा केमती ना RH रो वैल्यू हमको जणा अछि कितना 4% RH रो वैल्यू में पाई चंदी प्रीवियस रे 4% म जानतले बाहर कर दवा R रो वैल्यू जणा अछि 30% तो R जगह लेख प्लस 30 RH जगह लेख प्लस 4 प्लस 30 into 4 by 100. This is 34. This is 1.2. Net result 35.2. तो इटा 4%, इटा 35.2. Option A for Arunachal Pradesh is the right answer. जोड़ी ट्रेन लाइन नथिला. आ सबुठु हमर होची कोन जोरा कहउछन पॉपुलेशन डेंसिटी को स्टेट रे कम अछि लेस डेंसिटी होची अरुणाचल प्रदेश जागा अधिका लोक कम आमु जदि प्लॉट मिलो त हम सेठी शिफ्ट हे जिवा भलो जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की चला जिवा साइड ऑफ ए क्यूब increases by 10%. Find percentage change of its volume. एटा हम लाइन मेथड कर देली हबो केमथि लेंथ नै गेले 10 लेंथ ब्रेड्थ नै गेले 10 हाइट नै गेले भी 10 वॉल्यूम रो फार्मूला होच लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट हे गेला 1000 साइड टा इंक्रीज कला 10% इंक्रीज कला 10% माने 10 नॉट 10% 1 माने 11 ब्रेड्थ भी गेला 11 हाइट भी गेला 11 की होला 1331 बढ़िला केतना 331 बढ़िला 1000 रु नो की 1000 थिला 1331 हैला 331 बढ़िला 1000 रु 331 into 1000 by 1000 into 100 33.1% is the right answer 33.1 option B is the right answer ठीक है जिबा क्वेश्चन नंबर 27 The population of a country increases by 20% in the first year. एटा हमें करबा गोटे मेथड से मेथड ता ना होची लाइन मेथड्स जानि था प्रीवियसली हमें कहि छन लाइन मेथड कोन बुझे दोची लेट पॉपुलेशन थिला केते लेखा आइची इफ इट्स पॉपुलेशन वाज 10,000 3 years back 10,000 पॉपुलेशन थिला फर्स्ट ईयर रे 20% बढ़ी गला 20% बढ़ला माने केते लिखबा कि 120% ओके 20% बढ़िले लिखबा 120% 20% कमी थिले हमें 80% लिखता बढ़िले 100 रे प्लस करियो कमिले 100 रे माइनस करियो decreases 10% second year 10% decrease कला हैला केते परसेंट 90% then increases 5% third year रे 5% increase हला केते लिखबा 105% लाइन मेथड एकाथरे गोटे लाइन ने बाहर जिवो 11340 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर बुझला लाइन मेथड जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम लाइन मेथड यूज करिया चलो क्वेश्चन नंबर 28 के आसीले population based question population of a country increases 10% every year
इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन 26,620 एटा उल्टा दे देला रे प्रीवियस क्वेश्चन कौन थला कहलो 3 इयर्स बैक देथिला प्रेजेंट पचारला एटा प्रेजेंट पचारची 3 इयर्स बैक तुमको प्रेजेंट टा देइची 3 इयर्स बैक पचारला लेट 3 इयर्स बैक नहीं जाओ x फर्स्ट ईयर 10% इंक्रीज कला 110% then 110% then 110% that is given 26,620 हैला सॉल्व कर दले x आसीबो 20,000 ये गोटे मेथड्स आउ केतरा बहरे तुम पाइबो ये गोटे फार्मूला p होल इनटू 1 प्लस r by 100 to the power 3 equal to 26,620 ये गोटे ए प्रकार भी देछि एका जिंस तुम एटा को सॉल्व करले आसीबो 110 by 100 110 by 100 टा 3 थरा गुणा आइछ आमे भी 3 थरा मल्टीप्लाई करछन ये जा से एटा कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला टा ए पॉपुलेशन ग्रोथ रे यूज करा ये पकई पारि भल कथा नले लाइन मेथड गोटे सिखि था सब केस रे एप्लीकेबल होई परिबो बुझा पड़ला चलो जीवा एई मेथड यूज करी आउट क्वेश्चन सॉल्व करिया चलो क्वेश्चन नंबर 29 population of a village decreases 5% every year present population देला 2 years back पचला 2 years back x नहीं जाओ 5% decrease करछि लेखा 95% again into 95% and that is given 7220 हैला सॉल्व कले x आसीबो 8000 ये भी ऑप्शन है मैक्सिमम क्वेश्चन ऑप्शन ए रे ही था परीक्षा तुम यदि गेस मार दबो ए बेसी चांस আছে आंसर ठीक होबार ए हबो तापर ए पर आसीबो सी तापर बी तापर डी ए रो अधिका था सी देन बी देन डी बैंक प्योर थले पांचटा ऑप्शन थिबो बैंकिंग हले आउट ऑप्शन ई रहि जो ई बहुत कम आसे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ये आसला सेमती गोटे देखो या केवल लाइन मेथड कर दवा केमती देखो in an election between two candidates 10% did not vote let total voters का को जाय कलो जहा ना वोटर लिस्ट रे अछि ताको वोटर्स को जाय तुमको 18 वर्ष हे गले तुम वोटर हे जो सेमती की गारंटी नाही रे तुम नाटा वोटर लिस्ट रे आसीबा दरकार जहा नाटा वोटर लिस्ट रे आसीबो सीए हे गला वोटर्स 10% voters did not cast their votes लिखाई 10% लोक भोट देले नाही तार कोन असुविधा हेतियो गले नै ताको हमें कोन कोन जानि छ ताको आ जाय कोन एल आई पी लेजी इंटेलेक्चुअल पर्सन तुम देखो गाहा गळी रे पोलिंग सब 90% 95% हुए भुवनेश्वर रे पोलिंग होवा केते जानि छ 40% पोलिंग हुए तो भाव तो सर भुवनेश्वर तो बेसी शिक्षित लोक अछंती 40% पोलिंग काई हुए ना एलआईपी माने लेजी इंटेलेक्चुअल पर्सन है कौन वोट दा पे जे जितबो जितु मो खंडे वोटर कोन की जितु ना के हारि जाउ दिस इज द नेचर ऑफ एलआईपी डोंट बी एन एलआईपी इन योर लाइफ रे केबेले वोट द्वारा अधिकारटा केबे भी तमे लॉस करो ना जहा को भी दियो वोट किंतु दबो सुजिबा मेठी टोटल लिखा है केते ना एक्स नदी वोटर्स 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट 10% वोट देले नाही देले केते परसेंट ना 90% ठीक है 10% देले नी देले 90% 100 रु 10 माइनस कर देले 20% ऑफ द पोलिंग माने जिते लोग वोट देले वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड 20% वोट टा इनवैलिड ही गला तले वैलिड वोट केते माइनस कर दा 100 रु 20 माइनस कर दो 80% सब बले 100 रु माइनस करी करिवो 20% पोलिंग इनवैलिड ही गला तले वैलिड केते ना 80% गला 20% पोलिंग आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड
comma the winner who receives 60% of the valid vote. यदि winner पाइला 60% of the valid vote, defeater पाइबा obviously 40%. margin मु तुमको 500 vote रे हरेली ता माने को 500 vote मु पाइची margin माने तम vote मो vote difference हला 500 तो margin होची winner defeater difference को margin कहा जाए तो margin होची कितना 20% 60% 40% difference ला 20% लेखो 20% that is given 43,200 सॉल्व कर दले x पाई जो कहते हैं ना 2 lakhs 3 lakhs पाई x is coming 3 lakhs 1 2 3 4 5 3 lakhs is the right answer अच्छी ऑप्शन रे 1 2 3 4 5 ऑप्शन ए is the right answer आउ थोर कहूची एक्स नहीं गले वोटर्स अब ट्रेडिशनली आमे करिवा नाही बहुत लंबा है जो डायरेक्टली लाइन मेथड यूज करी करूचंती 10% वोट देले नाही 100 रु 10 माइनस कर 90% हला पोलिंग 20% डिक्लेयर्ड इनवैलिड वैलिड होची 100 माइनस 20 80% होची वैलिड विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट विनर जदी 60% पाइबो डिफीटर पाइबो 40% मार्जिन होची 20% लेगली 20% that is 43,200 x is coming 3 lakhs ठीक है जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस देखियो कार आगे आंसर आसी in an election between two candidates 30% voter did not cast their vote 30% देले नहीं देले कितने परसेंट 100 रु 30 माइनस कर दे 70 20% polling declared invalid 100 रु 20 माइनस कले 80% होची हमरो वैलिड वोट विनर पाइला 70% जदि विनर पाइबो 70% डिफीटर पाइबो 30% 70 30 रो मार्जिन होची 40% लिखली 40% that is given 44,800 हैला सॉल्व कले x पाई जो 2 lakhs 2 lakhs 2 lakhs 1 2 3 4 5 बी पर बालेश्वर इज द राइट आंसर बालेश्वर रे कोन अछि जगन्नाथ मंदिर गोटे भलो मंदिर अछि जगन्नाथ मंदिर बालाश्वर बाहनगा भी बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे जाउछि ट्रेन एक्सीडेंट हेतला चलो जीवा क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन टिके मॉडिफाई करा अछि देखिया चला कोन हेछि 32 क्वेश्चंस कोन देछि इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स लिखले एक्स होची वोटर्स 40% लोक वोट देले नाही भुवनेश्वर सिटी हितियो 40% देले नाही माने देले केते परसेंट 60% 10% पोलिंग डिक्लेयर्ड इनवैलिड वैलिड ले केते 100 रु 10 गले 90% होची वैलिड वोट winner receives 60% of the valid vote the winner पाइला 60% डिफीटर पाइबो 40% मार्जिन असला 20% लिखली 20% that is given 10,800 लिखा है 954 दिन 108 कटी जीवो x असला 1 लाख लखे तो चॉइस नाही रे x भरला 1 लाख x हमें कौन नहीं थिले x होची टोटल नंबर ऑफ वोटर्स क्वेश्चन किंतु टोटल नंबर ऑफ वोटर्स पचारि नाही रे देखलो कोन पचारची नंबर ऑफ वोट्स रिसीव बाय द विनर लिखि देला ताला हम आउथरे पुन आउट स्टेप करे पे पड़ियो केमती ना वोटर्स हे गला 1 लाख पांचटा शून्य 40% वोट देले नाही देले 60% 10% हे गला इनवैलिड वैलिड होची 90% देन विनर पहला कितना 60% लिखि दिया हैला केते आसीओ 954 100 32,400 32,400 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यदि वोटर्स के था 1 लाख विनर पचारला हमें बाहर करले
यदि विनर न पचारि डिफिटर पचारि थांता ताले विनर जदि 60% पाउची डिफिटर पाई थांता 40%, एडी 60% न लेके 40% हमें कैलकुलेशन करि थांते। बुझा पड़छ ना नाही रे? एबे हमें लाइक आउ सब्सक्राइब कर दी परिवा ना नहीं जो माने करि पारना ना और टेस्ट करिवा। ठीक अछि। जीवा क्वेश्चन नंबर 33। In an election between two candidates, 5000 voters did not cast their vote. vote देले नहीं 5000। ठीक अछि हो। देन तापर कोन तले आमे जो वोटर्स ता x नोथिले बर्तन x न नै कोन लिखिवा जति वोटर अछंती 5000 वोट देले नहीं। सिरि परसेंटेज तले एटी नंबर दे देला। तले x - 5000 लोक वोट देले। 10% polling declared invalid तले valid केता असला ना 90% लिखला में 90%। winner who receives 70% of the valid vote, winner जदि 70% पाइबो अरे बाबा डिफिटर केते पाइबो ऑब्वियसली 100 रु 70 माइनस ले 30%। नो कि winner जदि 70% डिफिटर पाइला 30%, मार्जिन केता असला ना मार्जिन असला 40%। लिखली मार्जिन असला 40%। and that is given केते लिखा है मार्जिन 18000। ठीक है एटा सॉल्व कर देले x आसीबो तमर केते ना x - 5000 equal to आसीबो 50000। x is coming how much? x is coming 55000। x आसला 55000। क्वेश्चन x पचारि नाही। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स रिसीव बाय द डिफिटर। ताले कोन करिवे x आसला 55000। हमर तो x दरकार नाही। हमर दरकार कोटा ना टोटल वोटर्स हला 55000। वोट देले नाही 5000। 90% हला पुलिंग। पुलिंग तो नुए 90% होची वैलिड वोट। विनर पहला 70%। जदि विनर पहला 70% डिफिटर पाइबो केते परसेंट करे 30%। ये हला आंसर। 50000 रो 90% रो 27% केते ना 13500। 13500 ऑप्शन नंबर बी फॉर बरहमपुर इज द राइट आंसर। ठीक है जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नंबर 34 आसिला अलगा वेराइटीज क्वेश्चन। when the price of sugar reduced by 20%, a person is able to buy 5 kg more sugar for 300 rupees। बापा तुमको 300 टंका देइथिले। 300 टंका नेकी जाओ मार्केट रो सुगर केचे आनियो। हठात घरे हठात दुकान पाखरे पहुंचला को देखलो को ना प्राइस टा कमी जाइछ। केतना 20% कमी गला। 20% प्राइस कमी गला माने घरे तुमको जेतिकी कहैतले आनिबा पई सेतिकी आनला पर पैसा निश्चित बळियो। 300 रो 20% केते ना 60 टंका बळी गला। 300 रो 20% होची 60 टंका बळी गला। तमे चाहितले 60 टंका टाको पॉकेट रे रखी चाट गोटे खाइतांत केते चाट पड़िबो 50 टंका 10 टंका बळी थांता। तमे से काम करिन। कोन करिचो 5 केजी अधिका नै आछ। ये जो 5 केजी अधिका आनिलो हातुर पैसा देख तो आनिन। ये जो पैसा बळीछ ना 60 टंका इटी 5 केजी एक्स्ट्रा नै आछ। 12 टंका पड़ी गला पर केजी। 12 टंका चॉइस रो अछि टिक चिन्ह मार देला माइनस मार्क आराम से पाई दियो भूल आंसर। ये जो 12 टंका पाइला हमें 12 टंका होची आजिका प्राइस। आजिका प्राइस होच तमरो न्यू प्राइस बा रिड्यूस प्राइस। क्वेश्चन तुमको आजिका प्राइस पचारि नाही। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ सुगर पर केजी। तो लेखो 80% इक्वल टू 12 टंका। अरे 80% कोड आसला कि 20% रिड्यूस हेजी। 20% रिड्यूस हेज माने 80% होची 12 टंका 100% टा केते 15 टंका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
बुझा पड़ला जीवा आउट क्वेश्चन सेम वेराइटीज चला मूव करिवा नंबर 35 when the price of food reduced by 10% 400 टंका मार्केट ने की जाइछ 10% प्राइस रिड्यूस हो गला 400 टंकार 10% होची 40 टंका 40 टंकार 8 केजी अधिक आनिछ डिवाइडेड बाय 8 5 टंका पड़िला तमरो रिड्यूस प्राइस पचारिछ ओरिजिनल प्राइस लेख 90% इक्वल टू 5 टंका 90% कोड असला करे ना 10% रिडक्शन है 90% यदि 5 टंका हुए 100% टा केते 5 टंका 55 पैसा सी इज द राइट आंसर ठीक है जीवा आ गोटे एठी हम कोन ला प्राइस रिड्यूस देजी एबे गोटे ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हेले कोन हो देखिबा आसला प्राइस ऑफ सुगर इंक्रीज बाय 20% प्राइस टा बढ़िला माने तुम पैसा बढ़िबो ने शॉर्टेज पड़िबो नै कि प्राइस दे बढ़ी जाईची जहा पैसा नेइथिलो सेटु तुमको अंटिबो ने शॉर्टेज पड़िबो 500 टंका नेइचो प्राइस 20% बढ़ी गला 500 टंकार 20% होची केते ना 100 टंका 100 टंका तमरो शॉर्टेज पड़ी गला 100 टंका शॉर्टेज पला माने कोन हबो कम आनिबो ऑब्वियसली ना 4 केजी कम आनिचो तो 100 बाय 4 25 टंका होची तमरो एटा होची न्यू प्राइस क्वेश्चन पचला ओरिजिनल प्राइस टा केते पचरची सो लिखिवा चला हमें 120% 120% होची 25 टंका काई लिखले 120% ना लिखा है इंक्रीज बाय 20% प्रीवियस क्वेश्चन डिक्रीज लिखा था बोले 100 रो माइनस करतला हमें एरे इंक्रीज माने 100 रे प्लस करदा 120% होची 25 टंका 100% टा केते 20 टंका 83 पैसा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बुझा पड़ची ओके जदि बुझी परछ मोर वीडियोस पाई लाइक एंड सब्सक्राइब भूलंतु नाही एबे कर दियो सब्सक्राइब कर जन करि पारनो असला 37 ये परसेंटेज चैप्टर सबु जो एमिति गोटे एग्जाम को जोटी कि मैथमेटिक्स क्वेश्चन पढिछि परसेंटेज क्वेश्चन नाही ए गोटी एग्जाम जदि कहि दबो तला हम YouTube क्लास हम छाड़ दबा कोनो से एग्जाम नाही मैथमेटिक्स क्वेश्चन पढिथिबो पण परसेंटेज रिलेटेड नुहे असंभव population of a village was 10,000 ये अलग टाइप रो क्वेश्चन आसला हो फर्स्ट में फंडामेंटल मेथड करबा तापर शॉर्ट मेथड को जिबा population of a village was 10,000 male नहीं गले x फीमेल होची कितना 10,000 minus x हला मेल होची x फीमेल होची 10,000 minus x male population increased by 10% plus 10% of x female by 20% 20% of 10,000 minus x overall population increased by 1400 प्लस लिखली 1400 इंक्रीज लिखा है प्लस 1400 सॉल्व कर देले x पाई जीवो केते ना x आस जीवो तमरो 6000 ऑप्शन नंबर C is the right answer this is method number 1 x यूज करी कला हम जोरी कि एई स्टेप पर हमका और तीनटा स्टेप कॉलेज आंसर बाहरियो सेकंड मेथड को जीवा मोस्ट पॉपुलर मेथड ता ना होची कोन ना एलिगेशन मेथड कौन एलिगेशन मेथड बुझीबा है सर
टोटल पॉपुलेशन दिया 10,000 एट लिखली मेल एट लिखले फीमेल मेल टा बढ़ी 10% फीमेल बढ़ी 20% लिखिदेले allegation method is an assumption method आम assume करिवा you assume that all are male if all are male then population increases 10% of 10,000 10% of 10,000 केते करिए ना 1000 similarly not possible practically but assumption आम नोचन if all are female केते बढ़िया कथा population 20% of 10,000 होची 2,000 ताମାନେ ଯଦି ସବୁ ଗୁଡା ମେଲ ହେଇଥିବ 1000 ବଢିଥାନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଫିମେଲ ହେଇଥିଲେ 2000 ବଢିଥାନ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ବଢିଛି କେତେ ନା 1400 1400 ଟାକୁ ମଝିରେ ଲେଖିଦବା ବାସ୍ ଏ ଦିଟାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ଏଠି ଲେଖ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ବିଗର ମାଇନସ ସ୍ମଲର ଡିଫରେନ୍ସ ଲଜିକ ହଉଛି ବିଗର ମାଇନସ ସ୍ମଲର ଯିଏ ବଡ ହେଲେ ଚଳିବ 1400 ରୁ 1000 ମାଇନସ କଲେ 400 आंको 2000 बड़ माइनस कर 2000 1400 रो डिफरेंस ला केते कि रे 2000 1400 रो डिफरेंस ला 600 600 इस टू 400 रेशियो केते आसला ना 3:2 6:4 लिख पारा 3:2 भी लिखि पारा ए 3:2 टाको भांगी दियो 10000 को 3:2 रे भांगी दियो 3 भाग 2 भाग केतला 5 भाग 5 भाग को 10000 भागु पला 2000 तो 3 भाग को पड़ला हमर 6000 2 भाग को पड़ला 4000 हे गला कोन हम पचारची फाइंड द नंबर ऑफ मेल बिफोर इंक्रीज हिसाब कला ना छक्की करी नेले जहा तले जे सेटा होची तार एटा होची मेल मेल 6000 होची आंसर यदि फीमेल पचरा आई थांदा फीमेल तले केते लगाय छै ना 4000 जदि लिखाई था फाइंड द नंबर ऑफ मेल बिफोर न लेके लिखे था आफ्टर आफ्टर इंक्रीज तो मेल हो 6000 मेल बढ़ी 10% 6000 10% बढ़ला माने हमें 110% लिखि थांते 6600 आस्तांता आंसर आफ्टर इंक्रीज करले 6600 बिफोर इंक्रीज माने ओरिजिनल आसला 6000 बुझा पड़ला एबे हमें जाई परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन निजे करि परिबा चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन population of a village was 8000 in the next year male population increased by 5% male by 5% female by 15% 8000 5% 8 पंचा 40 400 15% 15 120 1200 प्रकृत रे पॉपुलेशन बढ़ी 700 मझे लिख दियो 700 ए दिटांको डिफरेंस केते ना 300 एमान को डिफरेंस केते 500 रेशियो केते आसला ना 5:3 8000 को 5:3 रे भांगी दियो तो एटा आसला 5000 ये ला 3000 कौन पचार देखलो फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल बिफोर इंक्रीज माने आसी गला 3000 हैला आफ्टर कहितले 15% बढ़ी थांदा कि बुझा पड़छ ना नाही रे जाई परिया नेक्स्ट क्वेश्चन किछि पिला डिमांड करते सबुडा इंक्रीज देला डिक्रीज जोड क्वेश्चन करिया ठीक अछि चलो जीवा डिक्रीज मेथड जीवा क्वेश्चन को पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज 12000 लिखली 12000 मेल फीमेल नेक्स्ट ईयर मेल पॉपुलेशन इंक्रीज 5% सेमती परसेंटेज चलो करिया नंबर बाहर न करी
किछ पिला भाबते परसेंटेज कले केमिति हो आंसर लिखली इंक्रीज बाय 5 माने +5 फीमेल डिक्रीज बाय 10 -10 overall population remains same माने no change माने zero change माने zero change obviously 5 शून्य डिफरेंस केते हो 5 -10 शून्य डिफरेंस केते 10 10 5 रेशियो केते ना 2:1 12,000 को जदि हमें 2:1 में भांगिबा दी भागे येला भागे 3 भाग 3 पार्ट को 12,000 ता माने 2 पार्ट को 8,000 1 पार्ट को 4,000 क्वेश्चन कौन पचला देखलो कि रे फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल बिफोर इट डिक्रीज 4,000 ऑप्शन नंबर ए हला जिबा आ गोटे क्वेश्चन पूरा क्लियर नॉलेज करिवा डोंट वरी अबाउट दैट सब जति की वैरायटी सब टच करिवा पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज 5,000 5,000 लिखा गला मेल फीमेल मेल increase 10% plus 10% female decrease 20% minus 20% 5,000 10% होची 500 5,000 20% होची केते ना 1000 बट एटा माइनस एटा प्लस नो कि ओवरऑल पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 100 माइनस 100 लिखो ए दिटा को डिफरेंस नला बेले कोन करिवा मन में कि ता डिफरेंस नला बेले यदि सेम सिंबल अछि सिंबल भूली जीवो संख्या दिटा माइनस कर दो आ जदि ऑपोजिट सिंबल थिबो सिंबल भूली जीवो संख्या दिटा प्लस कर दो एडी कोन अछि ऑपोजिट सिंबल अछि हम कोन कथा हेतले ऑपोजिट सिंबल तले सिंबल दिटा भूली जीवो संख्या दिटा ऐड कर दो सिंबल भूलिबो संख्या दिटा ऐड कर दो 600 सेम सिंबल तले कोन करिवा सिंबल दिटा भूली जीवो संख्या दिटा माइनस कर दो 900 रेशियो आसला 3:2 3 भाग 2 भाग 5 भाग को 5,000 तो इटा आसला 3,000 इटा आसला 2,000 पचाची फाइंड द नंबर ऑफ मेल आफ्टर इंक्रीज मेल इटाला मेल होची 3,000 3,000 ऑप्शन रो अछि टिक चिन्ह मारले भूल हे जीवो रे कना डाला बिफोर इंक्रीज ओरिजिनल मेल बढ़ी 10% 10% बढ़ी माने लिखिबा में 110% 3300 होची राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है जिबा बे नेक्स्ट क्वेश्चन चलो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक population of a village was 20,000 लिखला में 20,000 next year male population male female increased by 10% female decreased by 10% 20,000 10% जे कितने ना 2,000 प्लस 2,000 माइनस ओवरऑल पॉपुलेशन कौन लिखे देख लो ओवरऑल पॉपुलेशन बिकम्स 21,000 20,000 थिला 21,000 हे गला बॉडी लाइट 21,000 लिखले भूली जीव 1,000 लिखियो रे काहे ना बॉडी चे 1,000 बस ओवर सेम सिंबल अछि सिंबल भूली जीवा संख्या दिटा माइनस कर दवा एटा ऑपोजिट सिंबल अछि सिंबल दिटा भूली जीवा संख्या दिटा ऐड कर दवा
3000 हजार रेशियो केते ना 3:1 तो 20000 को 3:1 रे भांगी दियो 3:1 रे भांगिले हबो 15000 5000 पचाला कोन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल आफ्टर डिक्रीज फीमेल होची 5000 किंतु डिक्रीज हला 10% 10% डिक्रीज माने केते परसेंट 90% 4500 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक है जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए 300 liter solution ये पर अलगा वेराइटीज क्वेश्चन पळे आसला हो पॉपुलेशन फिनिश नेक्स्ट वेराइटीज इन ए 300 liter solution of spirit and water concentration of spirit was 30% एटा फर्स्ट हमें फंडामेंटल मेथड करिवा तापर शॉर्ट को दिवा सॉल्यूशन ला 300 लीटर स्पिरिट केतो अछि स्पिरिट ना 30% 30% ऑफ 300 90 लीटर हाउ मच स्पिरिट इज एडेड x लीटर स्पिरिट ऐड हे गला थिला 90 मिसला x हेला 90 प्लस x यदि x लीटर तुम स्पिरिट ऐड कलो x लीटर ऑब्वियसली बढ़ी जीव ना सॉल्यूशन बढ़िबोनी सॉल्यूशन बढ़ी जीव सॉल्यूशन थिला 300 से भी x ऑब्वियसली बढ़ी जीव न्यू सॉल्यूशन रो 40% लिखाई न्यू सॉल्यूशन रो 40% होची स्पिरिट न्यू सॉल्यूशन होची 300 प्लस x तार 40% होची स्पिरिट सॉल्व कर देले x पाई जीवा केते x पाई जीवा ना x पाई जीवा में 50 लीटर्स इला मेथड नंबर 1 दैट इज द फंडामेंटल मेथड्स ए क्वेश्चन ना में से एलिगेशन मेथड भी यूज करी पारिबा केमती चलो बुझिबा लिवेली एठी में कहा सत्य कहा को ऐड करछंती ना हम गोटे सॉल्यूशन दिया आइची आमे सॉल्यूशन ने स्पिरिट को ऐड करछंती सॉल्यूशन दिया जी सॉल्यूशन ना स्पिरिट ऐड करछंती सॉल्यूशन मान ओरिजिनल सॉल्यूशन रे केते परसेंट स्पिरिट थिला 30% सर ठीक अछि स्पिरिट केते करी तम देहरे तमे केते अछ 100% मो देहरे मु 100% तमे कोड आसीबो तो स्पिरिट अछि केते परसेंट ना 100% बुझा पड़ला ओरिजिनल सॉल्यूशन ने स्पिरिट 30% स्पिरिट होची 100% जो ओवरऑल सॉल्यूशन हला ओवरऑल सॉल्यूशन ने स्पिरिट टा केते परसेंट हला ना 40% लिखा है 40% देखो ये दिटा को डिफरेंस केते 10% एमाने को डिफरेंस केते हला ना 60% हला 10% 10% 60% 10% रेशियो केते आसला कि 6:1 बुझा पड़ची ए 6 पार्ट तमरो दिया है देखो क्वेश्चन ने 300 लीटर लिखा है 6 पार्ट जदि 300 लीटर हुए 1 पार्ट केते 300 बाय 6 50 लीटर 50 लीटर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हैला चलो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त निजे ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 43 try yourself 1 minute time is given
Get us the answer. Anybody else? In the 500-liter solution, liquid solution, spirit. Solution ने कित परसेंट spirit अच्छी ना 40%. लेखो 40%. Spirit रे spirit कित परसेंट 100%. Overall solution ने spirit टा कित परसेंट नला ना 60% लिखा है जी. लिखली 60%. आसिगला दिटा को गैप किते 20%. एमान को गैप किते 40%. 40%, 20% ratio कितना असला 2:1. 2 part given. This 2 part is given 500 liter. 2 part यदि 500 liter हुए, 1 part obviously कितना होगा 250 liters. 250 liters. Option C is the right answer. Clear? चलो जी next question. Question number 44. In a 600 liter solution, concentration of spirit was 30%. Liquidity, solution, then spirit. Solution ने spirit अच्छी कितने percent? 30%. Spirit रे spirit होची 100%. इट लास्ट मोमेंट दे क्वेश्चन दैट ट्विस्ट है लिखा है so that concentration of water becomes 30%. जो न्यू सॉल्यूशन रे वाटर तमर हे गला 30%. यदि वाटर टा 30% हैला obviously spirit टा केता बस 70%. ओवर डिफरेंस केतेला 40%. ये डिफरेंस केतेला 30%. रेशियो आसीगला हमर 3:4. 3 पार्ट टा दिया रे देखो 300 लीटर ना 600 लीटर. 4 पार्ट टा केते हो 800 लीटर. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 45. In an exam consisting 2 papers, 73% students passed in math, 40% students passed in English, 35% passed in both the subjects. Then what percent students passed at least in one subject? इधर में स्कूल ले पढ़ते ले वेन डायग्राम और तुम्हें यूनियन इंटरसेक्शन मेथड भी पढ़ पारो. लिखा है जी मैथमेटिक्स और इंग्लिश. मैथमेटिक्स यूनियन इंग्लिश रा मॉड्यूलस. That is math ra mod plus English ra mod minus mathematics intersection English. Mathematics लिखा है कितने परसेंट 73%. English लिखा है 48%. 35% passed in both. ठीक है. Then result is coming how much? It is solved result as 86%. 86% passed at least in one. Option A. जदि आमे ताको वेन डायग्राम रे करिवा. वेन डायग्राम total होचे 100%. that is universal set. Mathematics set intersected by English set. Math होची 73%. English 48%.
इंटरसेक्शन एटा 35%। ताले एई पार्टटा केते आसीबो कहलो 73 माइनस 35 आसीबो 38%। एई पार्टटा केते आसीबो 48 माइनस 35 13%। 38 35 13 तीनटा मिसा you can get same number 86%। at least one subject माने को at least one माने minimum गोटे सब्जेक्ट रे पास करथिया दरकार अधिक हले भी चलिबो। ओनली मैथ रे पास कले चलिबो, ओनली इंग्लिश रे पास कले चलिबो, बोथ रे पास कले भी चलिबो। क्लियर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। आराम से पेशेंस रखिए देखो गोटे वीडियो रे संपूर्ण परसेंटेज चैप्टर में कवर करिवा। देखला बेले जदी पेशेंस न पा पॉज कर दो पुणी फ्री है कि आउथरे कंटिन्यू सेटू करि परिबो। वन शॉट गोटे वीडियो रे हम संपूर्ण परसेंटेज तो कवर करिवा। याकू छाडी देले अन्य कोन सी वेराइटी जाऊ क्वेश्चन तमे पाइबो नाही। पूरा जीरो रो हीरो हमें एक क्वेश्चन सेट रे बनै जंती। In an exam, number 46, in an exam, 72% students passed in reasoning, 30% passed in math, 8% failed in both. What percent students passed in both the subjects? Same चलो में union math, the modulus, reasoning plus mathematics minus reasoning intersection mathematics. रीजनिंग यूनियन मैथमेटिक्स होजी केते ना 92%। 92% कोड आसला कहलो ना लिखा है 8% फेल्ड इन बोथ। जदि में वेन डायग्राम को जीबा ताले ऑब्वियसली कोन होबो देखो 8% फेल्ड इन बोथ। ए बाहरटा होचे 8% जे कोउथरे पास करि पारला नाही से फेल्ड इन बोथ हे गला। जे कोउथरे पास कला नै से फेल्ड इन बोथ है 8% यदि फेल्ड इन बोथ रेस्ट 92% पिलांग देरे पास टाइम बाजेला। सो रीजनिंग इज गिवन 72, मैथमेटिक्स गिवन 38 minus x means x which intersection passed in both the subject जोटा कि दिया जाए नहीं। then x is coming how much 72 रे 38 मिसले केतला 7 3 10 110% minus 92%, 18% is the right answer. Option B. Option B for Berhampur is the right answer. Hela jiba 47 questions. In an exam, 87% students passed in math, 53% English, 7% students failed in both the subject. चलो आम टे भेन डायग्राम रे कर दवा जो पिला माने भेन डायग्राम बुझ पान भेन डायग्राम रे कर दवा। चलो फार्मूला न पकई कौन सब्जेक्ट लगा है मैथमेटिक्स और इंग्लिश। ये ला मैथ 87%, इंग्लिश 53%, मैथ 87%, इंग्लिश ला 53%, 7% फेल्ड इन बोथ दिस सब्जेक्ट बाहर टा 7%। तो मैथमेटिक्स यूनियन इंग्लिश रा मॉड्यूलस मैथ प्लस इंग्लिश माइनस मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन इंग्लिश। दिस इज 93%। कोड असला 93 करे हमें कथा हेतले यूनिवर्सल सेट टा होची 100%। 7% माइनस कर देले ऑब्वियसली 93% ला ग्राफ पुडा। मैथमेटिक्स गिवन 87, इंग्लिश गिवन 53,
minus x. X is coming how much? X is coming 47%. এই পার্ট হলা 47%. 47% পিলা both রে পাস কলে। ଏବେ ଗ୍ରାଫଟାକୁ ଦେଖ। ଏ ଟୋଟାଲ ଗ୍ରାଫଟା ଆମର 87 ଦରକାର। 47 କଟିଗଲା ଆଉ ରହିଲା କେତେ ନା 40%। 87 minus 47 40%। ଏପଟେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାଫଟା ଦେଖ। ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାଫଟା 53 ଆମର ହବା ଦରକାର। 47 କଟିଗଲା ରହିଲା କେତେ 6%। क्वेश्चन कौन पचाला देखिल। क्वेश्चन पचाला what percent students passed only in one subject? Only in one mean either only in mathematics or only in English. 40 6 46 46%. Option B for Bombay is the right answer. Hela jiba next question. Number 48. In a college, the ratio of strength of arts, commerce and science 5:3:4. 5:3:4 को चलो 500 300 400 नहीं जो आमु सुविधा हो। Next year strength increase by 10%. 500 रो 10% होची 50 50 से बढ़ीला हेला केते 550। 20% 300 रो 20% केते किरे 60 हेला 360। 30% 400 रो 30% केते 120 400 रे 120 मिसले 520। रेशियो आसला 55 36 52। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एमिति कल हबो और अदरवाइज रेशियो लिखा है 5 3 4। 10% बढ़ला मन लिखो 110 इंटू 5। 20% बढ़ले लिखो 120 इंटू 3। 30% माने 130 into 4. Same results you got before 55, 36, 52. Clear? Jiva next question. Same process I would question chalo kariya. Number 49. A ratio of strength of 3 sections in a class 4:5:6. 400 500 600 नहीं गले। Next year strength decrease by 10%. Good decrease है 10%. 10% माने 40 कमिला 360 है। Next increase by 10%. इटा 10% increase कला 550. Then decrease by 20%. 600 रो 20% ला 120। Decrease है 480। 36 55 48 36 55 55 तो नहीं बोधे चॉइस रे नहीं रे none of this is the right answer. 36 55 48 is the right answer. अच्छी ऑप्शन ने ऑप्शन 9 none of this. हेला जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 हाफ सेंचुरी मारले हमें। A student was secured 30% mark was failed by 12 marks. दी जन पिला क्लास रे कंपटीशन करूछंती। ए गोटे पिला तम भला दुष्ट बी गोटे पिला तमठु आउरी दुष्ट। ए रखला 30% मार्क। दुख समाचार कौन हैला ना एटाला पास मार्क लिखली फेल हे गला 12 मार्क पाई। तमने ता मार्क होची पास मार्क ठारो 12 मार्क कम। बी गोटे पिला से रखिला
40% मार्क रखी किंतु पास मार्क ठारू 28 मार्क अधिका रखी लिखाई क्वेश्चन देख है केते इजी लगा देख ये 40% ये 30% 40% 30% गैप केते ना 10% 10% इक्वल टू 40 40 गोटे आसला कहल एवटेक 12 किलोमीटर एटा 28 किलोमीटर पूरा घरटा तुम 40 किलोमीटर होगलानी ये 12 ये 28 40 होगला 10% 40 हेले 100% टा 400 एकदम सस्ता क्वेश्चन टा 400 इज द राइट आंसर मारले 50 एम ओके जो पिला माने एपर्यंत स्टिल देखुच विदाउट एनी पस then thank you very much to all of you. Please subscribe and like. Jiva, next question number 51. Same to Jiva, dijon pilla A बोला तमे 35% अल्प दुष्ट was failed by 35 marks 35 marks में से fail है another students who secured 40% was failed by 10 marks ये ला पास मार्क तमे फेल है कितना 35 मार्क पे फेल है आउटे पिला बी तमने एउटे डिस्टेंस ला 35 35 बी गोटे पिला से रखी 40% बट सी भी फेल है 10 मार्क पे तमे भी फेल सी भी फेल भलो सांग दियो निश्चित हेतिबो 35% 40% भीतर गैप केते लागिले ए बी भीतर देखिलो 5% 5% इक्वल केते मार्क ना 5% नंबर होची केते ना 25 25 कोडा असला कि रे तमे 35 पे फेल हेइछ से 10 पे फेल हेइछ माइनस कर दिले 35 रु 10 गला 25 5% जदि 25 हैला 100% टा बाहरिबो केते ना 500 500 होची हमर मैक्सिमम मार्क टोटल मार्क होची 500 क्वेश्चन तो टोटल मार्क पचारने क्वेश्चन कौन पचारची फाइंड द पास मार्क बी रखिची 40% तले बी रो मार्क केते ना 40% ऑफ 500 200 मार्क रखिला बी बी रखिला 200 10 मार्क पे फेल हेइची रे 10 ऐड कर दियो 210 ऑप्शन में अछि ना नहीं yes option number A is the right answer option A is the right answer clear जीवा नंबर 52 52 क्वेश्चन को जीवा A sold a mobile to B gain of 25% B sold it to C at a loss of 10%. C paid 5625. How much A pay? ये लाइन में थोड़ा आराम से जो A रो प्राइस नहीं गली X A B की सेल कला 25% गेन रे लिखली 125 बाय 100 B sold to C 10% लॉस रे सेल कला 10% loss माने 90%. That's equal to 5625. हैला सॉल्व कर देले x पाई जीवो 5000 ऑप्शन नंबर ए लाइन में आराम से गला जीवा नेक्स्ट 53 क्वेश्चन को जीवा some students from different schools appeared for an Olympiad exam 20% of the boys 15% girls failed in the exam number of boys who passed the exam was 70 more than number of girls who passed the exam total 90 students failed find the number of students that appeared the exams okay ठीक अछि हमें नहीं जीवा let number of boys को B नहीं गले
आ गर्ल्स को जी नहीं गल 20% बॉयज 15% गर्ल्स फेल द एग्जाम 20% बॉयज माने केते करे 0.2 बी प्लस 15% गर्ल्स 15% माने केते करे 0.15 जी टोटल 90 पिला फेल होछन इक्वल टू 90 इक्वेशन 1 दीटा वेरिएबल हे गला 0.2 बी प्लस 0.15 जी इक्वल टू 90 इक्वेशन 1 गला देन तापर आ कोन कुजी देखो द नंबर ऑफ बॉयज हु पास यदि बॉयज पास करले ना फेल ले 20% ताले पास करियो केते 80% 80% जे 0.8 बी गर्ल सेमती पास कले केते परसेंट फेल होइचंदी 15% पास कले केते ना 85% 85% 0.85 जी से लिखी जी नंबर ऑफ बॉयज पास दिस नंबर 0.8 जी माइनस 0.85 जी इला बी इला जी दैट इज 70 कहीं ना लिखी जी बॉयज पास 70 मोर देन गर्ल्स पास इला बॉयज पास इला गर्ल्स पास इक्वल टू 70 इक्वेशन 2 सॉल्व कर देले जी पाई जीवो 200 बी पाई जीवो 300 total students पाई जीवो 500 find the number of students appeared in the exam 500 option number C is the right answer okay जीवा next question number 54 चलो जीवा 54 in a manufacture unit it was noted that the price of raw materials has increased by 25%. Labor cost gone up from 30% of the cost of raw material to 38% of the cost of raw material. What percentage of consumption of raw material be reduced to keep the cost same as before? तो हमें देखिवा कौन टोटल फर्स्ट नहीं गले लेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल चलो x नहीं जीवा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स 100 नहीं चलो 100 नहीं गले कॉस्ट ऑफ लेबर चार्जेस केते लिखा है ना 30% 30% ऑफ द रॉ मटेरियल 30 टोटल हमर केते ला ना 130 टंका खर्च होतला ठीक अछि 130 खर्च हैला एबे को होला ना एटा 25% बढ़ी गला 25% बढ़िला माने केते ला ना 125 हे गला देन ये 30% टू 38% हे गला तो 38% बढ़ला माने केते आसीबो देखो एटा हमर आसीबा केते ना 47.5 यदि ऐड करिवा 125 रे 47.5 ऐड कले केते आसला कि रे this is coming how much 172.5 बढ़िला केते माइनस करो केते बढ़िला ना फार्मूला होच हमर 172.5 हेला थिला 130 by 1 what is the percentage consumption raw material be reduced by 172.5 into 100 the result coming how much 24.6% option A is the right answer Jiva next question number 55 the price of petrol shot up by 5% before the hike. The price was 82 per liter. 82 per liter. A man travels 3045 km every month in his car, gives a mileage of 15. What is the increase in the monthly expenditure approximately of the man's travel due to the hike of the petrol?
एकदम सस्ता क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत लंबा गोटे लाइन आंसर हम 3045 किलोमीटर से जाइए तार माइलेज हूँ 15 टंका लिखाई 15 किलोमीटर पर लिटर ताले एतिक लिटर तेल से खर्च करूथिला 3045 डिवाइडेड बाय 15 एतिक लिटर तेल से खर्च करूथिला प्राइस थिला केतना 82 रुपीस पर लिटर लिखाई लिखिदेले 82 हैला एबे प्राइस हमर शॉर्ट अप माने बढ़िला 5% बढ़ी गला बस हे गला गोटे लाइन आंसर आसला केते 832 टंका 832 इज द राइट आंसर से पचारछि केते बढ़िला व्हाट इज द इंक्रीज ना 5% बढ़िला केते हेला कहितले एटी 5 न लिखे हम 105% लिखता कि बुझा पड़ला आउ थरे कहूची 3045 किलोमीटर तुम ड्राइव करछो मंथली गाड़ी रे माइलेज होची 15 किलोमीटर डिवाइड कले केते लीटर तेल खर्च होची बाहरी गला तेल दाम होची 82 रुपीस पर लीटर मल्टीप्लाई कर देले 5% बढ़िला केते हला फिनिश नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 56 प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जन भूली जाइछो सब्सक्राइब करि दियो एते लंबा टाइम हम पढेलेनी नेक्स्ट वीडियो पे सब्सक्राइब कर देले नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आसी जीवो 11 by 5 of the number a is 22% of b 11 by 5 a of a number 22% of b okay so this implies a by b a by b केते आसला ना a by b आसला हमर केते 22 कटिगला टी 1 by 5 11 दुने 22 2 कटिगला 50 1 by 10 a by b रेशियो पाई गले 1 by 10 फिनिश b is equal to 2.5% of c तो b by c केते आसला कि देखो b by c केते 2.5 टा कटिले 1 by 40 हे गला तले a जदी a के b हला 10 b 1 रे c 40 तले b 10 रे c केते हो 400 a b c रेशियो पाई गले 1 10 400 then find the sum of 80% of a and 40% of b if c is 5500 देछि c जदि 5500 हेला लिख देली c जगह यदि 5500 लिखि दिया जाए त माने 400 पार्ट 400 पार्ट टा जदि 5500 हुए 1 पार्ट टा केते हो 1 पार्ट टा 55/4 55/4 ला a b केते हो 10 पार्ट टा केते हो ताले b ना 550/4 ओके ताले से पचला 80% ऑफ a और 40% ऑफ b केते 80% ऑफ a ला 55/4 plus 40% of b 40% of 550/4 ए दीटा मिसले केते होबा करे 66 एटा परसेंटेज नुहे रे परसेंटेज होबा ना खाली 66 इज द राइट आंसर ऑप्शन सी दीटा 66 रही है परसेंटेज रहइबो आंसर परसेंटेज रहइबो नाही ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 in a factory 400 employees a ratio of number of male employee to that female employee 5 3 5:3 5 3 8 5 40 तो मेल केते आसला 250 फीमेल आसला 150 there are 87.5% regular employees 87.5% माने 7/8 है 7/8 of 400 350 होचंती रेगुलर एम्प्लॉय
92% of male employees are regular. मेल है 250 250 रो चलो 92% बाहर कर दवा 250 रो 92% केते करे 250 रो 92% केते आसीबो केते आसला 0 0 कटला 5 कटला 2 5 कटला 5 2 कटला 46 530 5 20 3 23 230 230 ଆସିଲେ male regular employee. Then se ପଚାରିଲା what person female are regular 350 होउଛନ୍ତି total regular 230 होउଛନ୍ତି male regular तले female regular केते माइनस कर दवा चलो 350 रु 230 माइनस ले केते हला 120 total female केते ना 150 into 100 120 by 150 into 100 80% is the right answer. 80% given. Option C. Over. Next चलो जीवा number 58. A spends 60% of his income. लिख ले income. Income नहीं गले 100 टंका. 65% से खर्च कला रे. तले भलो पिला बेसी करू नहीं. Expenditure 65. सेविंग केतला माइनस कर दिया 100 माइनस 65 100 माइनस 65 होची 35 गला नेक्स्ट हिज इनकम इंक्रीज बाय 30% 100 थिला 30% बढ़िला 130 हे गला एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेंडिचर 20% बढ़िला 65 थिला 20% बढ़े कि 85 कर दिले सब भूल भाल है जी 20% बढ़िला कहार 20% ना 65 रो 65 रो 20% कितना 13 बढ़िला हला केते 65 प्लस 13 65 प्लस 13 होची 78 तले सेविंग केता बको 130 होची इनकम 78 माइनस कर दिया सीएला 30 एला 22 52 हे गला तार सेविंग क्वेश्चन पचारला by what percent does his saving is increase or decrease saving तो निश्चित बढ़िला रे 35 थिला 52 हेला केते बढ़िला माइनस कर दिया 17 कोड 17 बढ़ला ना 35 रु 17 by 35 into 100 48.57%. Option A is the right answer. ठीक है जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन चलो 59 क्वेश्चन सेम मॉडल अलगा ठीक अछि अलगा अछि ए नंबर k when multiply by 30% गोटे नंबर होची k is multiplied 30% of itself gives a number which is 170% more than k 170% more माने 270% हेगला नो कि 170 more माने 270% of k ये गोटे क्वेश्चन एटा एग्जाम रे आस्तला k के कटिंग गोटे के रहला से k टा केते आसो 0 0 कटि गला 30 नुआ k ला 9 9 अछि ऑप्शन रे यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 की चले गले a man started off a business with a certain capital in the first year he earned 60% of the profit and donated केते लिखा है donated 50% total capital हो त लेट तर इन्वेस्टमेंट होची 100x
प्रॉफिट कला 60%, 60x, टोटल इनकम केते गला 160x नो कि तार 50% से डोनेशन कर देला, 50% अधा 80x से डोनेट कर देला, 80x डोनेट कला आ 80x रहिला गला. He followed the same procedure with the same capital for second year, third year. पुणी सेमती सेकेंड ईयर कौन ला देख 80x थिला ता पागे, लाभ हला केते परसेंट 60%, 60% लाभ ना टोटल पला केते 160%, 50% डोनेशन 50% रहिला, एटा कैलकुलेशन क्लास 64x सेकेंड ईयर गला. पुणी थर्ड ईयर चलो दिवा सेमती 64x थिला, 60% लाभ कला तो टोटल पहला 160%, 50% खर्च कला, ये कैलकुलेशन कले केते आसीबो हमर ना 51.2x. If at the end of 3 years he left with 15,360 equal to this figure, लेखो 51.2x हेला 15,360, 100x केते 100x आसीबो हमर 30,000. ऑप्शन नंबर 8 लाइन बाय लाइन घेर कर दल. 60 टच कले रे आसीला सीनियर सिटीजन, 60 वर्ष ले सीनियर सिटीजन. जीवा चला 61. A is 120% of B and B is 65% of C. ताले बेटर होची C की चला हमें 100 नहीं जीवा, C होची 100x. B केते हबो ना 65% of C माने 65x. A केते हबो 120% of B कला 78. A B C मिसे दियो, A हेला 78x, B हेला 65x, C हेला 100x, मिसेल हेला 243x, 243x हेला 121.5. ओके, देन से पचाला कोन x पाई जीवा, x होची हाफ बारला, से पचाला C minus 2B plus A. हो C जार केते लिखिबा हमें 100x minus 2B, B जार ला 65x plus A ला 78x. एटा सॉल्व कला हमर केते आसला के 48x, 48x पाइचन हमें हाफ, एटू x टा पाइतला हाफ एउटू into half 24. B for Brahmpur Achar is the right answer. Have a patience. पूरा सबु वेराइटीज हमें टॉस करछन टिके पेशेंस रखिबो, पेशेंस इम्पेशेंस ले पॉज मारी पुन नेक्स्ट डे रे देखिबो. But one video we are covering all the percentage questions. चलो 62 को जीवा. A fruit seller sells 45% of the oranges that he has along with one more to a customer. Let total orange तापर x थिला 45%. ताले फर्स्ट सेलिंग रे से कौन कला 45% देला, 45% माने केते कि रे 0.45x प्लस 1 ऑरेंज एक्स्ट्रा दे देला. रिमेनिंग रहिला केते ना x minus 0.45x minus 1, तो कि 0.55x minus एतिकी रहिला. पुनी सेकंड सेलिंग कोन कला, he then sells 20% of the remaining oranges and two more. 20% सॉल्व करिवा, 20% is कहारो ना 0.55x minus 1 एतिकी सेल कला प्लस आ कोन लिखला एक्स्ट्रा केतरा लिखि ना, एक्स्ट्रा लिखि नै
20% remaining oranges and 2 more to the customer plus 2 लिखी परा plus 2 लिखिला तो केते आसला देखो so this is coming how much एतिकी से सेल कला देन रिमेनिंग केते रहबो पुनी माइनस करबा रिमेनिंग तमर आसीबो केते ना 0.44x minus 2.8 पुनी जो थर्ड सेलर पकू थर्ड सेलर को 90% देला थर्ड सेलर को देला 90% 90% ऑफ कहारो ना 0.44x minus 2.8 देला एतिकी and still left with 5 oranges एतिकी से देला देई सला पर स्टिल ता पाकर 5 oranges रहला तो सॉल्व कर देले x पाई जो 120 टिके लंबा क्वेश्चन आसला 120 आसीबो आंसर ऑप्शन नंबर सी ओके जीवा लास्ट वेराइटीज क्वेश्चन नंबर 63 এটা একদম সস্তা এটা if the sum of 40% of a number अरे 40% 30% मिसले के देला 70% 70% टा होची 140 फाइंड द नंबर 100% टा केते 200 अच्छी ऑप्शन नंबर है अच्छी आ गोटे क्वेश्चन अछि लास्ट क्वेश्चन एटा ताले 64 टा लास्ट क्वेश्चन इनकम ऑफ ए इज 80% B is income ताले कोन करबा आउ कोन लिखिछि and expenditure of A is 60% of B expenditure if the income of A is 90% of B's expenditure then what are the saving of A more than that of B? Oh. Income of A is 80% of B's income and expenditure of A is 60% of B's income. Income of A केते लिखला का गुतला सयनला सुविधा हबो हमको लिखली इनकम it लिखले एक्सपेंडिचर सेविंग BA इनकम ऑफ A 80% ऑफ B's इनकम यदि B रे इनकम में 100 नवा एर इनकम केते लागिरे 80 गल्ला expenditure of A 60% of B's expenditure if income of A is 90% of B expenditure income of A माने एटा 90% of B's expenditure एटा भाइजो लिखला में एठी 90% एटा को B कर देली of B इक्वल ए नंबरटा 80 तला में ए नंबरटा पाई जिबा ए नंबरटा केते आसला देखो ना 00 कटिला 100/9 ए नंबरटा पाई गेले 100/9 बी रे जदी एक्सपेंडिचर हमें पाई गेले 100/9 देन एठी लिखला कोन पड़ गला एक्सपेंडिचर ऑफ ए 60% ऑफ बी रे तले एटा में पाई जिबा बी ए रे एक्सपेंडिचर केते ना 60% ऑफ बी रो एक्सपेंडिचर 100/9 100 कटि गला 3 कटले 20 3 कटले 3 20/3 एटा पाई गला then tapare ne kon pachalla then by what percent saving of A more than that of saving of B पुणे माइनस करिवार सेविंग 100 एला 100/9 माइनस कले केतला 800/9 एला 80 एला 20/3 माइनस कर 3 24 240
240 माइनस 20 केतला 220 बाय 3 सॉल्व कले रिजल्ट आसबे केतना 140%, 140%. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. Hela. Then by what percent saving of A more than that of saving of B? Saving which are A number, saving of A, this number, more than B, minus this number, by this number into 100. Finish. सरला परसेंटेज एवे जिबा आमे बुक्स उपरकू. दिस इज माय बुक्स. ए बुक्स रे आमे कथा हेतले ऑल चैप्टर्स आर गिवन. माने तमर बैंकिंग पाखर आरंभ करी एसएससी, ओपीएससी, ओडबलएससी, ओ ट्रिपल एससी सब एग्जाम रे जे माने कैट मैट भी, एमबीए, कैट मैट जैट ए सब क्वेश्चन गोटे बारे कवर आमे करिचु. बुझेला. माने एडवांस मैथमेटिक्स अच्छी प्लस अरिथमेटिक भी अच्छी, दीटा मिसी के अच्छी. ऑल एग्जाम पे गोटे बय कवरेज अच्छी. गोटे बय रे आमे सब जिंस पाइ जाय परिबा. 30% डिस्काउंट इज अवेलेबल. ऑनलाइन मगे दे परिबो. एप्टीट्यूड बुक्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड मारले कल्पतरु सर बयटा आसी जिवो, शो करिवो. देन यू कैन परचेस. गोटे बय आमे आनिले एते सब जिंस आमे कवरेज पाइ परिबो. ऑल थिंग्स आर देयर इन वन बुक. आउ तुमको अलग अलग एग्जाम पे अलग अलग बही किनिया पे पड़िबो नाही. वन book with many solutions. Okay, thank you very much. Please like and subscribe. Thank you.